Hello everyone, welcome back to my channel. Here's Priyasha Das for day 2, video number 2, where I'll be talking about CMAT special RCs. तो यहाँ तक आप आ ही गए हो और आप consistently इतने सारे videos देख रहे हो, तो I just want to tell you that I am super proud of you. Please stay consistent like this. And let me just tell you that this video will contain the answers to 2 CMAT RCs, passage number 1 and passage number 2. And the way you will go through these videos will be slightly different because you have to read the passage before I actually explain it to you. That's why I have shared this PDF already with you on Telegram, my official Telegram group, where I have added it as a pinned chat. So you can go and just search for CMAT RC. आपको ये वाला PDF मिल जाएगा. In case you are not able to still search it, feel free to drop me a message on Instagram. I will directly send it to you in your DM. No problems in that. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जाकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बिकॉज इससे पहले भी जितने भी वीडियोस रिलीज किए थे मैंने सीमैट के फ्री क्रैश कोर्स के, सभी के पीडीएफ्स आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे. सो मेक श्योर यू गो एंड गेट इट फ्रॉम देयर. एंड द प्रोसेस वुड बी दैट वंस यू रीड द पैसेज एंड डू द क्वेश्चंस ऑन योर ओन, दिस वीडियो विल हेल्प you to understand the process of how to approach these questions and then what are the exact answers to it. Let me be very clear that these are exactly of the CMAT pattern, absolutely same level of difficulty, and I am very proud to say that very close to the real exam also. So therefore make sure that you people can vouch on that and do it. हम ये भी बात करेंगे कि कैसे CMAT की RCs दूसरे OMETs के comparison में different होती है. So now let's get the video started, assuming that आपने ये PDFs download कर ली है and आपने पढ़ ली है and attempt कर ली है. Okay, even if you have not done and you directly want to see the solution, all welcome. Let's get started. So here I'll just quickly take you through the sentences. मैं थोड़ा fast जाऊंगी because I'm taking an assumption कि आपने ये passage पढ़ा है. At least कम से कम video pause करके तो अभी screen से पढ़ ही लिया होगा. So the first paragraph says that the other night Sahara Samay made some sensational disclosures that I don't know why every other news channel in the country didn't pass out with envy. तो इस sentences से आपको कुछ समझ में आ रहा है that what is the way they are talking out? Okay, they are being like, oh my god, is this true? ये टाइप का सेंटेंस है ये. दैट मीन्स कि हम थोड़ा सरकास्टिक हो रहे हैं. इफ दिस वाज इन द ब्रेकिंग न्यूज, वेल देन आई डोंट नो व्हाट द अदर वर्ड्स वुड मीन. द स्टोरी वाज अबाउट यूएफओ, मेनी पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, बट आई ओनली remember 2 segments. Not remember, but I'm just jumping. And if I was to overcome, I could not see anymore. I rushed to the window, convinced that I see fleets of udan antriksh. Okay, I cannot pronounce this Hindi word, but this is what you need to learn in the RCs. चाहे हिंदी word हो या English के difficult words हो, जो आप pronounce नहीं कर पा रहे हैं, please वहां पर आपको किसी को impress नहीं करना है, तो 2 second भी waste ना करें उस word पर जिसे आप pronounce नहीं कर पा रहे. Okay, लैंडिंग इन अ पार्क आउटसाइड एन आर्मीज ऑफ लिटिल ग्रीन मैन रेजोल्यूटिंग मार्चिंग आउट. तो आप समझ सकते हो कि एक जोक बना के वो बोल रही है कि जैसे ही मैंने न्यूज देखा मुझे लगा क्या होगा अगर मुझे भी ऐसे कुछ एलियंस मेरे पार्क में दिख गए तो. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी द नरेटर ऑथोरिटेटिवली इन्फॉर्म्ड अस दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून, मेट मेनी एलियंस, ओ माय गॉड, हु वार्नड हिम नॉट टू रिटर्न. In what language is not clear. Maybe they spoke perfect English. As we know from our SF novels, anything can happen. But what did they look like? Also not clear, because the naughty NASA has kept their pictures secret from the rest of the world. जैसे कि आप देख सकते हो, words like naughty NASA, इस तरह से हम मजाक उड़ा रहे हैं, sarcastic हो रहे हैं. तो ये बहुत important है समझना कि the author is not actually very happy with the news and is actually making fun of these news. Sahara Samay further informed us that there is apparently many ujdi hui bastis on the moon, and the aliens residing in these bastis told the later moon missions that too, that earthlings were not welcome on their world, and this is why NASA has not organized any manned missions on moons for years now. समझ रहे हो बात को? तो इसने बहुत अच्छे से किया है. इन्होंने फिर अमेरिका पर एक डिग भी लिया है कि कैसे अमेरिका रशिया के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है. तो यहाँ पर उन्होंने उसके बारे में बात की है कि किसने इंफॉर्मेशन दिया, थिंग्स लाइक दैट. ओके, द सेकंड सेगमेंट ऑफ द स्टोरी दैट आई कॉट वाज अबाउट अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट who had set up a camp in Himachal Pradesh, and one day they looked a white clad alien strolling around the mountainside. Now this alien seems to have got tired of simply strolling about because it proceeded to rapidly climb the mountain. When the narrator was telling us that we also have some pictures, I peered at the screen as hard as I could and finally gave up, because all I could see through the blurred picture looked like
a large tooth. Scientists clearly saw the alien, just like many TV viewers who frequently see some mysterious white lights in the sky, right? And the funniest part of the passage is yet to come, guys. This says that, in fact, some time ago on India TV, a viewer had sent a picture of God he had taken from his mobile phone. And the channel showed up the picture for a long time following the words ये देखिए भगवान की तस्वीर. तो चलो एक अच्छा रिफ्रेशिंग पैसेज तो था कम से कम, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड कि इसकी क्वेश्चन पैटर्न क्या रहती है. देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट ब्रेकिंग न्यूज डिड सहारा समिट डिलीवर. बट यहाँ पर आपको केयरफुल होना है. यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो डेटा आपको पैसेज से मिला आप डायरेक्टली उसे चिपका दोगे. व्हाई? बिकॉज here we are talking about some sensational disclosures, we are talking about disclosures of some scientific discoveries and some fleets of udan antrikshis and all that stuff. But then these are all being mentioned in a sarcastic tone, my dear friend. जो author है या फिर कह सकते हो the one who is speaking is actually the person who is making fun of things, saying that oh my god, what a breaking news, oh my god, how important it is. But it's actually a likely story about UFO क्योंकि उसे खुद इस story पर विश्वास नहीं है. So this is what we call as interpretation. Easy question है but फिर भी interpret करना जरूरी है इन टाइप के क्वेश्चंस को. आप अगर इंटरप्रेट नहीं करोगे तो कैसे समझोगे, है ना? So the answer to the first question is C. For the second question, why could the author not see more than 2 segments of the story? ठीक है, बहुत सेगमेंट्स थे बट आई कुड सी ओनली 2 सेगमेंट्स. She was overwhelmed with emotions? Not at all. She was filled with fascination? Not at all. She was filled with disgust and anger for spreading superstition? Yes, but let's confirm it. She was filled with praise for the news channel and wanted to congratulate them for presenting an envious story? Not at all. And therefore the correct answer for this question is also C. कि वो एक्चुअली डिस्गस्ट हो गई थी इसलिए वो सरकास्टिक टोन में बातें कर रही थी. लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द फोर्थ क्वेश्चन गाइस. ट्राई इट ऑन योर ओन. व्हाट डाउट्स डज द ऑथर पोस्ट टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? तो उसे डाउट किस बात पे था कि ही नेवर लैंडेड? नहीं. दैट ही नेवर मेट एनी एलियंस एज देयर इज नो लाइफ? यस. द एलियंस ऑन द मून डोंट स्पीक परफेक्ट इंग्लिश पे डाउट नहीं था क्योंकि द थिंग इज नॉट क्लियर, वो उस सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन था. If you want, I can show you quickly that it was not been mentioned, not clear. Okay, this part. So it was not clear what was the language of exchange. तो इसलिए उस पर उसको doubt नहीं था. All right. So this is not. As you see, कितना close option है. आपको ये भी लग सकता है कि मैम सी भी तो सही है, बट सी को सपोर्ट करने के लिए एक सेंटेंस ऑलरेडी वेट कर रहा है पैराग्राफ में. This sentence is actually telling you that I am absolutely not clear about it. So how will she be in doubt then? Don't get confused in this. Okay, now the last option is there are hardly any aliens in the science fiction book. This is opposite. This is wrong because the sentence says that because in the science fiction's book we do know that anything can happen, okay, when it's aliens. So therefore option B is the most sensible answer out here. I hope you understood this. The fourth question says what was claimed to be shown and what was really shown on the television screen. What was claimed to be shown? हम आपको एलियन दिखाएंगे, हम आपको एलियन दिखाएंगे. हम आपको टूथ दिखाएंगे? नहीं. But what was really shown? They showed the picture of tooth. They showed a blurred picture of something that resembled a tooth. And they showed a tail. Tail तो नहीं show किया था. तो अब you have to make a decision between A and B and you have to be very specific about English language here because they did not show you exactly tooth. They showed you a blurred image which looked like tooth. So looked like is resembling. Option B. Okay. Here's the fifth question जिसका आंसर हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में दे दिया था कि एटीट्यूड इज कंप्लीटली सरकास्टिक ओवर हियर. अब जिन लोगों ने अभी तक वीडियो देख ली है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को अब तक दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं किया, उनसे मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन तीनों काम को कर दीजिए. और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आपके साथ है. एंड हाँ, जो थोड़े लेजी लोग हैं जिन्होंने अभी तक इस पीडीएफ को डाउनलोड करके चेक नहीं किया है, उनके लिए मैं एक काम करने वाली हूँ. फॉर पैसेज 2 आई एम कीपिंग दिस ऑन स्क्रीन फॉर नाउ. Take a screenshot, read it your own self. Okay, first paragraph, and this is the screenshot of the second paragraph.
So take a screenshot of this also. This is the first question of it. This is the second question of it. Take a screenshot. This is the third and the fourth question together. Take a screenshot. And this is the fifth question. Take a screenshot. आई होप दैट आपने सारे स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं. तो अब एक बार स्क्रीनशॉट्स लेके खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. Let's get started. So in order to succeed in efforts to communicate our thoughts effectively to the receiver, okay, we need to understand that communication does not take place only by using words. More than what we communicate is how we communicate. Crucial. Okay, we want our messages to be understood and accepted and taken into account of existence. We will talk about non-verbal accompaniments of the communication. उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है gestures, voice, pitch, facial contact. These are powerful non-verbal signals. फिर कुछ examples दिए गए हैं, आप यहाँ पे jump कर सकते हो. That communication is the art of being understood. We also know that it increases, leading to misunderstandings. When that happens, the failure of communication, what happens? When we speak our ideas in any way we like, then only misunderstandings happen. Okay, and the success or the failure of the communication with the people also depends on our relationship with that people at that point of time when the communication is taking place. So when you want to master the art of communication, you have to master the art of being aware of your relations with the receiver of the message. The last paragraph talks about the importance the speaker pays attention to invisible presence of the non-verbal factors also, like the act of communication. At no cost they should be bypassed. When we talk, they come into play and add force to our words. When we are angry, the angry words like hate, disgust, good for nothing comes in. वैसे ही हमारी पिच हाई हो जाती है, वॉइस रेज हो जाती है, एंड वी हैव knitted eyebrows, tensed facial muscles. But when we are in a happy mood and want to exchange idea with others, then we get into a sharing frame of mind, and we start with sentences like let's discuss. Okay, we our pitch is under control, voice is not raised, and the facial muscles are also not tense. We have a smile on the face. तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज कम्युनिकेशन नॉट टेक प्लेस बाय यूजिंग वर्ड्स ओनली? क्वाइट अंडरस्टूड क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी इसका आंसर सही दिए होंगे. आई एम प्रीटी श्योर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज नॉन वर्बल अकम्पनीमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन ऑलवेज हेल्प अस for our messages to be understood and accepted both. When we come to the seventh question, what does the writer mean by the powerful non-verbal signals? He means these things. These are all direct questions, guys. You don't need explanation from me. And trust me, ये CMAT level ही है. What leads to an increased failure of communication, misunderstanding and communication breakdowns? तो इसमें options काफी ज़्यादा close हैं, but पता है हमें कि interruption की कोई बात नहीं हुई थी. When we talk like we are forgetting out the relation with whom we are communicating, when we communicate without caring about what our listener wants to talk about is never been mentioned, so this is also out. When we supplement our oral communication with non-verbal signals, तो ये तो positive बात है, इससे थोड़ी ना हमारा कोई communication breakdown या negative impact आएगा. So that leaves me with the answer as option C. Makes sense? Let's quickly go down to the last two questions. What should be at no cost bypassed? तो क्या हमने ये सेंटेंस बाईपास वाला देखा ही था, दैट ओवर हियर इसको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है गाइस, तो प्लीज पे अटेंशन. क्या कंफ्यूजन है यहाँ पर? इट इज इंपॉर्टेंट that the speaker pays attention to the invisible presence of the non-verbal factors in the act of communication. At no cost should they be bypassed. तो इसको देखकर कोई भी ऑप्शन ए पर चला जाएगा. But read the option A carefully. The speaker's attention to the invisible presence of persons other than the one we are talking to is wrong. Invisible presence of non-verbal factors is what is important for us, and therefore बस invisible वाला word use नहीं किया है, but non-verbal cues को importance दी है, जिसको हमें bypass नहीं करना है, जो कि हमारा पूरा का पूरा central theme या idea है for this entire passage, and that's the answer. तो keyword पकड़ के CMAT में मत चलना, है ना? All right, number 10, the last question. When is the pitch under control, voice is not raised, facial muscles are not tense, and we have a smile on the face? Well, that brings me to the last line itself. This happens when we are in a happy mood, want to exchange ideas. Now read this. All the options look correct to you. When we are in a happy and cheerful mood, when we are when we are into sharing frame of mind and exchange our things generously, when we are in a mood to share our thoughts and ideas with others. When we are not angry is not there.
तो अब आप कौन सा आंसर सिलेक्ट करोगे? यहाँ पर आपको अगेन यू हैव टू प्ले लाइक यू प्लेड इन क्वेश्चन नंबर 9. You have to think that this is only half of the answer. This is also only half of the answer. But this answer is actually taking both the things into consideration. Now, the only word which is not there is happy. तो यहाँ पर अगर हैप्पी मूड होता तो आप समझ जाते कि हैप्पी मूड और शेयरिंग आइडियाज दोनों की बात हो रही है. बट हैप्पी मूड की जरूरत नहीं है, बिकॉज थिंक ऑफ योर ओन सेल्फ. व्हेन समवन कम्स एंड टॉक्स टू यू, यू आर लाइक, not today please, I am not in the mood. I am not in the mood itself means that you are not in the happy mood. That means if you use the word mood alone as well, we assume it to be a happy mood only. Okay, and that brings us to the end of this video, guys, with the last question as always. How was the video? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. एंड जस्ट लाइक यू वर देयर फॉर द पास्ट सो मेनी वीडियोस, स्टे कंसिस्टेंट एंड वॉच एंड प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज. आप कर लोगे, मुझे आप पर विश्वास है. एंड विद दिस हैप्पी नोट, आई एम टेकिंग योर लीव. I'll come back for the third video as well. Take care, study hard, and love you a lot. Take care. Bye bye.